आज आपका टॉपिक है कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग वीकेंड पे क्या करने वाले हो। वीकेंड समझते हो? सैटरडे संडेज जो आते हैं, वीकडेज जो होते हैं, वीक ऑफ डेज, जो ऑफ डेज होते हैं वीक के, उस दिन आप लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? चलो सब लोग एक एक बारी बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। request you to write it. I request you to write it. तीनों को. I request you to write it. ऋतुजा, प्रखर, मनोज, तीनों आप लोग लिखो कि what you are going to do this weekend. अभी सैटरडे संडे कल आने वाला है, आप लोग क्या करने वाले हो? अच्छा, now listen, one thing more. आपको मुझे अपने इस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड, इस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड और आपके विंटर ब्रेक्स जो आएंगे ना, आप लोग क्या होते होंगे दिसंबर में, तो वहां तक का आपको बताना है एक ओरली कि आप आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो, ऐसे. सो स्टार्ट स्पीकिंग. कौन बोलना चाहता है? मैम तो इतना सारा हम लोग कैसे सोचेंगे? अभी थोड़ी प्लान की होंगे. आप अपने मन से कुछ भी बोल दो प्रखर, ऐसा प्री प्लान्ड. अब कभी ये सोच लो ना कि अभी कोरोना खत्म हो गया तो आई एम गोइंग टू माय नानीज हाउस, या आई एम गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप विद माय फैमिली टू महाबलेश्वर, या किधर भी यू कुड राइट एनीथिंग. सपोज करना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. Ma'am, so first we have to speak for this weekend. You have to write about this weekend, then next weekend, then फिर आपका समर ब्रेक विंटर ब्रेक आ जाएगा. मतलब you basically the word I want to know about your plans. अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आप अपने प्लान्स कैसे बताते हो. इसमें आपकी क्या पता चलेगी? इसमें आपकी वोकैबुलरी पता चलेगी कि how you use the words. Okay, ma'am. So, ma'am, can I start? हाँ, श्योर. अगर आपको लिख के पहले आप लिखना चाहते हो फिर आप बोलना चाहते हो तो वो भी ठीक है, जैसा आप. मैं ऐसे अभी और नहीं बोल रहा. मैम पहले मैं इस साले वीकेंड का बोलूंगा. ठीक है. Okay, I will play cricket with my brother and then go to my brother's house. Then I will complete my homework of my school. Then I will play cards and other board games at night and then sleep. And on next weekend, I will go to Lucknow. And in winter, I will go to Junnu, Jaipur, and other places to travel. I'm done. Ma'am, can I speak for this weekend? Start. You can. I have planned that I will go to Statue of Unity, which is in Gujarat, this weekend. I have booked the tickets in the tent city, and I have planned a lot of things to visit jungle safari, river rafting, children nutrition park, valley of flowers, cactus garden, butterfly garden, and many more things. There is also a seaside cycling, which I am very excited to do, and I have planned to leave tomorrow 5 p.m. because it takes 3 hours to go there, and I have my check-in time to 12, and I have heard about it that this is the longest statue in the world, which is about 182 meters long, and there is also a dam known as Sardar Sarovar Dam, which is one of the most biggest dam in all of the world. Ma'am, can I speak for the winter? In winter, I have planned to go to North Leh Ladakh. I have also booked. I am planning to book some bikes, so that we will travel with the bikes, because in mountains bikes are very. We'll travel नहीं होगा. We'll ride with the bike.
will ride the bike because bikes are comfortable in the mountain areas and also are looking cool. After the Leh Ladakh, I am planning to go Goa, and in Goa, I am planning to take a I'm planning to travel there for 4 to 5 days. I will also Very good. Yes. Then next. ma'am, can I speak? हाँ. Ma'am, can I speak? अभी तो बोला आदित्य. Ma'am, Anand. अच्छा आनंद हो. हाँ ओके आनंद. Ma'am, this week. Ma'am, I will go to my nanny house, which is at Shajanpur, and I will do a lot of fun there. I will go to eat pizza and burger at Domino's. I will play cricket with my mama. I am. हाँ सही है. फिर. And I will also eat my favorite imli laddu, which is famous a lot at there. Ma'am, can I Nice. speak for winter? हाँ sure. In winter, I will go to southern states. What? In winter, I will go to southern states. अच्छा. Southern, like Kerala, Andhra Pradesh. In Kerala, I have planned to stay in Munnar Castle, and I have planned a tempo traveler to go there, and I will go with my whole family. Then after that Munnar Castle, we will travel by tempo traveler to Andhra Pradesh and other southern states. Thank you. Nice. Yes, ma'am. This weekend I am going to trip with my family. Later I am going to shopping. Then I meet my friend. I attending the expert session. Then I clean my cupboard. I am playing in the night. In the night. Yes, ma'am. At night. At night, okay, ma'am. This winter season. This winter season, my plant is going to Mumbai. And later going to sister house, and then I will going to trip with my friends. Then I will going to Mumbai. Hello, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. हाँ I'm there. मैम हो गया. ठीक है. उसके बाद मनोज. मैम मैं बोलूं? हाँ मनोज. वेट उत्कर्ष, हम लोग ना प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं कि इस वीकेंड और अगले नेक्स्ट वीकेंड और आगे जो आपके विंटर ब्रेक्स आएंगे उसमें आप क्या करोगे. हाँ. So everybody has spoken. Now Manoj is going to speak and फिर आपकी चांस रहेगी. So you can prepare yourself. ठीक है. This weekend I will go to biscuit factory with my friends and I inspect the factory, how to make the biscuit with safety, and I will go on playground to play many more games with my friends with wear mask. Winter season I have planned to visit temples and I will try to read mysterious languages on in the temples, and I have also planned to visit Taj Mahal. I will book my tickets to go Agra. आपका पूरा हो गया ना विंटर तक का. Yes, ma'am. ओके ठीक है. नाउ चलो अब मुझे ये बताओ. The next question is, what do your families do on the weekend? Simple question, दो line वाले. What do your families do on the weekend? What do your parents do on the weekends?
यस मैम, मैं बताऊँ क्या? हाँ हाँ My families are going to park. आर गोइंग नहीं बेटा, आर गोइंग मतलब कि वो जाने वाले हैं या जा रहे हैं। हैड गॉन क्योंकि वो Ma'am, can I speak? Okay, ma'am. वेट Mm, वेट आदि लेट हिर कंप्लीट। my families are gone. My families had gone to park. Then my families are then my family are visit the my sister house. देन माय फैमिली हैड विजिटेड, Okay, ma'am. Then my family had visited sister house. Then my then my family had gone to Agra. हाँ हाँ Then my देर, family. ऐसे मत बोलो देन माय फैमिली, जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ऑन लास्ट वीकेंड माय फैमिली विजिटेड माय सिस्टर्स प्लेस, फ्रॉम देयर दे, फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे, ये नहीं बोलेंगे माय फैमिली, ठीक है। फिर हम बोलेंगे दे वेंट टू आगरा एंड देयर दे सॉ ताज, देयर दे सॉ द ताजमहल एंड नाउ सी, फिर मैं कहाँ पे थी, हाँ, there we got some pictures clicked, and after that we had so much fun. We ate, we had a lot of street foods, फिर हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स खाए, मैं ये बोल रही हूँ। then we had a lot of street foods, and the street foods were so tasty there, and after we stayed there for 2 days, my family, yeah, they everyone stayed for 2 days, and then after 2 days we were back to the town, yeah, we were back to our place। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। Ma'am, can I speak? Okay, ma'am. हाँ, My family had watched the new movie, and my family हाँ, had go to eat at a restaurant. had gone, Had gone to eat at a restaurant. हाँ My family had to go at enjoyable place बेटा, like बेटा एक बेटा एक मिनट मनोज, रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट Okay, ma'am. क्या बोलते हैं? Restaurant. हाँ, My family had to go at an enjoyable place like Sahyadri Mountain. क्या क्या, फिर से बोलना। My family had to go at an enjoyable place like Sahyadri Mountain. मतलब उनको अभी जाना है? No, ma'am, वो गए थे अच्छा, my they had gone to, कहाँ पे at an गए? enjoyable place like Sahyadri Mountain हाँ and enjoy हाँ and click photos on the Sahyadri Mountain हाँ, and share the memories to relatives. ओके, वेरी नाइस। हाँ मैम, बोलो। हमें वोकेबलरी करेक्ट करने के लिए हमें कुछ टिप्स दीजिए, मतलब हम थोड़े बार वोकेबलरी हम ठीक कर पाए। आ, मैंने मैंने तुम लोग को बोला था ना, तुम लोग रीडिंग करो। यस मैम, हम कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा खुद सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं तो ओके मैम। कुछ भी किसी के बारे में भी लिखो, माय फादर माय मदर, कोई भी टॉपिक ले लो, उसके बारे में लिखो और लिख के मुझे भेज दो। ये तुम लोग का मतलब एक्स्ट्रा है, जो मैं बता रही हूँ। माय फादर माय मदर, कोई भी टॉपिक ले लो और उसके बारे में लिखो, और किधर भी यू फाइंड अ, और फिर उसके बाद यू कैन सेंड इट टू मी, और उधर जो भी मिस्टेक होगा आई टेल यू। Okay, ओके ma'am. मैम, हाँ, थैंक यू मैम। और यू कैन डू वन थिंग, तुम लोग कोई भी हिंदी की कहानी या कुछ ले लो और उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। Okay, ma'am. ओके तो मैम। ये भी तो मैम, देखो, आपने मुझे बोला था कि वो मुझे मॉरल नहीं लिखने आ रहा था, तो आप बताएंगे?
कौन सा मॉरल? मैम तब मैं भी भूल गई थी। तब आपने हमें हम न्यूज ज्वाइन हुए थे, तब हमने आपने स्टोरी दिखाई थी, तब हमें मॉरल नहीं लिखने आया था। कौन सी स्टोरी थी, कुछ याद है? मैम कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को स्टोरी बता दूंगी, डोंट वरी। ओके मैम, मैम ओके मैम। हाँ मैम, अगर हम प्रिंसिपल है और हमें स्टूडेंट को लिखना है कि आप स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर रहे, तो हाँ, हम रेजिग्नेशन क्या लिखे मैम? क्या क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट? है कि हम प्रिंसिपल है। हाँ, तुम प्रिंसिपल हो और तुम किसी बच्चे को क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल। ईमेल लिख रहे हो कि व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द स्कूल। हाँ तो यस मैम। तो हम नीचे अपना नेम लिखते हैं ना मैम? नहीं तो तुम लोग लिखोगे रिगार्ड्स, मतलब मान लो तुम प्रिंसिपल हो तो तुम लिखोगे वहां रिगार्ड्स मनोज कोंडलवड़े प्रिंसिपल। ओके मैम। हाँ मैम हम वहाँ पे डियर स्टूडेंट ऐसे ही लिखेंगे ना? हाँ हाँ, डियर स्टूडेंट या डियर पेरेंट्स। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? नो नहीं मैम। मैम। ओके, सो शैल वी एंड द क्लास फॉर टुडे? यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय मैम, हैव अ गुड डे। सेम टू थैंक यू। यू मैम।